Hare Krishna. Welcome all of you to our weekly youth class, and we are discussing the acronyms of Bhagavad Gita. So, anybody remembers last class? What were the acronyms? What was the word we discussed about? Doubt. Doubt. Correct. So, D stand for mhm, Dhritarashtra and Duryodhana. Okay, verse number 1 to 12. This is very easy way to remember Bhagavad Gita. So, if you can write it down, and you can just memorize this one word, and you'll memorize the whole chapter, what is this talks about. So D stands for Dhritarashtra and Duryodhan. Uh, chapter number, this is verse number 1 to 12. O stands for ominous results, the signs, different signs due to consults and all, which were showing that Pandavas are going to win. That was represents verse number 13 to 20. U stands for uncertainty, uh, which was Arjuna was not certain whether to fight or not to fight and what will be the outcome, which was depicted in the verse number 21 to 27. And B stands for bewilderment, which was uh, Arjuna underwent bewilderment and completely confused what to do, what not to do. Verse number 20 to 30. And T stands for turning point. Those five reasons he gives 31 to 46. Why not to fight? Why he will not fight? So this is doubt, D-O-U-B-T, the first chapter. Now the second chapter is very simple, Gita, G-I-T-A. So G stands for Guru, verse number 1 to 10. I stands for identity, verse number 11 to 30, 30. T stands for two duties. You know, uh, this is basically karma. What are our duties? Which is described in the verse number 31 to 53. And 54 to 72 stands for A, Atmaram. A for Atmaram, just Gita. So remember this, G for Guru, I for identity, T for two duties, TWO, two duties, and A stands for Atmanam. That's it. So second chapter contains 72 verses. So if you remember memorize like this, then the whole Gita will be in your brain, in your mind. What is spoken where? It will be very easy for you to identify the verses and then speak about it. Okay. So let's start. Are you in a position to share? Okay. He's sharing, I think. Uh, okay. Can we zoom it a little bit? Okay. Okay. If somebody can see, they can read. G Guru. Uh, this is very clear. Very good. Just scroll down a little bit. In my screen, it is scroll down. I'm not able to see the top part. Yeah, this is good. This is good. Yes. Anybody can read it? This is quite clear. Hare Krishna, Prabhu. Yes, I'm read it. Guru, desiring not to fight, but simultaneously torn and confused. Arjuna approaches Krishna in desperation. I am in dire need of guidance. He humbly submits. Please enlighten me and mitigate my misery. Arjuna teaches us the first fundamental step in spirituality, seeking help from an authentic guru who has mastered the spiritual art and embodies what they teach. Most things in life require a qualified teacher, and the spiritual path is no different. Some believe that everything they require for their spirituality is contained within, and while there may be truth to that, we still require help to reawaken
that innate spiritual consciousness. As the saying goes, one who accepts himself as a guru accepts a fool for a disciple. Yeah. So the very famous verse of Bhagavad Gita 2.7, where Krishna tells this, Arjuna tells, Karpanya doso pahata subhava, prichhami tvam dharma sammuda chetaha, yastreya nishchitan bruhitam me sishyasteham sadhi mamam upannam. So with reference to that word, this whole series 1 to 10 is termed as Guru, G for Guru. So uh, here after Arjuna gives all his uh, arguments, logic, why not to fight, then he submits to Krishna. Oh Krishna, I need guidance. Sishyasteham sadhi mam tam upannam. You please enlighten me. So here uh, the author writes a very nice thing. He writes that although you may think that all the spiritual knowledge is within you, that is correct. That is logically correct that everything spiritual is contained within us because we are spirit soul and Krishna is super soul and he's seated in our heart. But to rekindle that, to bring out spiritual knowledge in our heart, we need the help of an expert person, expert guru. Like when Srila Prabhupada went to America, so we can say that in one sense, uh, these hippies or these Americans, they had Krishna consciousness in their heart because Prabhupada tells Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Sravanadi Suddha Chitta Karay Uday. So this Krishna Bhakti, Krishna Prem, knowledge about Krishna is eternally situated in our heart. But you need a person to rekindle it, to bring it out from your heart. Just like fire is there in the wood, but you need a matchstick or you need another source of fire to ignite that wood. And once that wood catches fire, then you don't, then then automatically it will burn. So same way, although there may be spirituality contained in our heart, but we need help of a person, of a guru who can ignite that fire. That's why Arjuna surrenders here to a uh, to the greatest guru or Jagat Guru, which is Krishna. Now, a very important point here is that you know sometimes even though we are practicing bhakti, but sometimes due to our uh, false ego or due to our uh, immature understanding, sometimes we don't take full advantage of guru or sometimes seniors or mentors. So sometimes we start thinking that yes, I know everything. Now I am sufficiently knowledgeable and I can go on with my spiritual life on my own. Here comes little difficulty where there is a possibility of that we may slip down or fall down from the path of bhakti. Because no matter how much we know, no matter how much expert we become, we need guidance at every point of life. Because we cannot surpass Maya with our own strength right now. It is not possible. That's why Krishna tells that this point that Mama Maya Durattaya, Mame Prapadyante, Maya Mitakarante, Mama Maya Durattaya, very, very difficult to overcome. So as soon as you think that, oh, I am now very advanced or I am little senior, I am mature, I can deal with it. But you will see that there is always a chance that we may just get succumbed to Maya. So that's why those who are very alert to this thing, they will always seek guidance and they will always want to be in the proper association. So healthy fear of Maya is good for our spiritual life. We should have healthy fear of Maya. We should not take Maya very cheaply. Hmm? So
Sometimes many devotees we have seen in the past, if uh, they have gone home and stayed for many long days, and just like one devotee, he came from his home now after 10 days, was telling Prabhu it's not easy to stay there. No, I was again and again getting tempted on to sister's marriage. And, so many young women and all they were coming with nice dress up and all these things. So we are prone to get succumbed there. So that's why at all step of life we need guru, we need help. Now when we talk about guru, it is all maybe Diksha Guru, Shiksha Guru, and whoever mentor who is teaching us. We need their help, we need their mercy. At all till the end point of our life, we need their mercy. Then only we can move ahead. So just like Arjuna is confused here, we may also get suddenly confused and just get bewildered. What to do now? And all knowledge, whatever we have learned till now, may just remain useless at that point of time. So that's why seeing this example, because it is not that Arjuna was a fool, he was a great warrior, one of the best warrior in the world, and already benefited by so many demigods. He has defeated even Lord Shiva and got Pashupat, uh, this weapon from Lord Shiva, Pashupat weapon. And then no, he was benefited by Indra because he is the Ansha of Indra. Kunti, Kuntri invoked Indra that he was born. So such celestial demigods had empowered him. Just imagine. Still he got confused and bewildered. That shows that if Krishna wants, he can bewilder us at any point of time. Any point of time. So the best part uh, of us to remain in Krishna consciousness should be to be under guidance, to be under shelter. As soon as you feel that, yeah, I am drifting away from shelter, I am drifting away from devotee association, you immediately come to the shelter and take guidance, take association, take proper steps to rejuvenate our bhakti. This must be done on a regular basis, and then together we all can fight Maya and stay strong on the path of bhakti. Otherwise, situations may just drift us away. Huh? So this is one point, and second point is that here Swayam Bhagavan Keshav Maharaj writes in his book that one who accepts himself as a guru, he accepts a fool as a disciple. We should not think that I have become guru now. I don't need guidance. Now I know many things, I can teach anybody. And I don't need guidance, I don't need anything. So if we become like a self-acclaimed guru, then we will accept all fools as our disciples. And then they will they will cause us to fall down because they will glorify us unnecessarily without our quality. They will not point our anarthas. So it's very dangerous. This is dangerous. That's why guidance is required at all point of life, and we must seek guidance and shelter. That is very much essential. This is the core theme of the first 10 verses of Bhagavad Gita, chapter number 2, 1 to 2, 1 to 10. That is Guru, G for Guru. Next, I, identity. Let us read about that. 11:30. Share. Have you shared, Prabhu? Hare Krishna. Hridayanath Prabhu, you are sharing? No reply. Okay. Let me read about this identity, then I'll discuss. Duties are able to hear me? You're able to hear me? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. Yes, Prabhuji. Okay. Okay. I think Hridayanath Prabhu is not able to hear me. थोड़ा वॉइस Okay. ब्रेक हो रहा है मुझे. Okay. Okay. So But I'm I think reading Prabhuji about मेरा identity.
मेरा आई थिंक हाँ, मेरा नेटवर्क कम है प्रभु जी, या बाकी सबको भी आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे आ रहा है प्रभु जी ब्रेक No, होके, अभी Proji. बाकी लोगों को मेरा इंटरनेट स्लो है प्रभु जी। Screen is like Proji, like buffering and screen is रुक के चल रहा है. थोड़ा स्लो स्लो आ रहा है, मतलब से रुक अभी रुक के आ अभी रहा है, आपका वीडियो भी और ओहो, बट मेरा तो इंटरनेट फुल दिखा रहा है। मेरे को प्रभु जी फुल दिखा रहा है, पता नहीं कैसे रुक रुक कैसे वीडियो आपका ना अटक ब्लर ऐसा अटक अटक के बाहर आ रहा है, जैसे बफर जैसे होता है ना वैसे। ओहो, really? So should I do something or should I continue? What should I do? प्रभु जी बाकी ड्यूटी से पूछिए, शायद मेरा नेट खत्म स्लो होगा शायद, बाकी ड्यूटी से पूछिए। Yeah, बाकी बाकी ड्यूटीज सुन पा रहे हैं क्या? ठीक से देख पा रहे हैं? Yes, Proji, voice is clear, but your screen is buffering like. है ना, वीडियो लैग तो कर रहा मैं है ना, और थोड़ा वीडियो ऐसा लग रहा है कि आवाज थोड़ा डिलेड Yes. आ रहा है, ऐसा लग रहा है। वही वीडियो मुझे भी वीडियो यही रुको, लगा। वीडियो ऑफ करता हूँ। रुको, वीडियो ऑफ करता हूँ। अभी अभी आवाज क्लियर आ रहा है क्या? Yes, Proji. ठीक है। बाकी लोग करण को अंकुश को कैसा आवाज आ रहा है? आवाज ठीक आ रहा है? यस प्रभु जी, प्रभु जी आवाज आवाज क्लियर है, वीडियो बस बीच में लैग हो रहा है, आवाज क्लियर है। चलो, तो वीडियो को दरकार नहीं है, आवाज को ही हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो आई एम रीडिंग अबाउट आइडेंटिटी। सो दिस इज रिटन हियर, in response to Arjuna's confusion, Krishna reveals something simple but profound. You are not this body, he says, but an eternal, indestructible spirit soul. We are spiritual beings on a human journey. As the bird lives in a cage and as the driver operates a car, we, the spirit soul, similarly inhabit, animate, and utilize. And okay, 1 second. Nidha is writing something. Nidha, your internet is weak. So anyhow, we'll continue. We are spiritual beings on a human journey. As the bird lives in a cage and as the driver operates a car, we, the spirit soul, similarly inhabit, animate, and utilize this body to interact with the world. Yet, we are different from this body. In ignorance of this, the soul is subjected to the process of reincarnation, accepting unnatural material bodies and the subsequent sufferings and distresses of life in this material world. This is the first teaching that the Guru imparts, knowledge of who we really are. While it may seem elementary and basic, such wisdom has rarely been understood and applied. When our decisions factor in this crucial understanding, it reroutes our entire life trajectory as Arjuna will himself experience. So this text number 11 to 30 of Bhagavad Gita basically talks about the identity, our identity as spirit soul. We are not this body, we are spirit soul. So we are shared here. Yes. Yeah. So, huh. So now, one thing is very important as a spiritual practitioner. This identity of us as a spirit soul should always be ingrained in our mind. See, Lord, all of us almost we know this point, but we are not acting on it, or in fact, we are not trying to act on this point in a practical life. So then, we are affected by bodily discomfort, by, some. Now, what is the symptom of one who is living on that platform? Krishna will tell now in text number 54 to 72. So here comes a very important point for all of us as a spiritual practitioner. We have to slowly and gradually elevate our consciousness to come above the bodily platform, at least to some extent. So now there are certain opportunities in our life where we can experience this. Like now, Nirjala Ekadasi is coming, 7th June. So when we do Nirjala, whole day, we fast, we read, chant, and do core spiritual activities. So some point in our mind it comes, I'm not this body, you know. So at least in a day,
You must make a habit of thinking like this. I'm not this body. I'm spirit soul. This body is temporary. I'm going to leave this body. So this inner understanding must arise in our heart, in a day, at least once, at least once. So the whole day should not pass just remaining on the bodily platform and just, working to satisfy the demands of this body. No, we must take a break, think for some time, and realize actually I'm not this body. And this happens only when we read Shastras with a soul understanding of looking for some higher realization, some higher knowledge. Oftentimes, when we read Shastra, so there is some purpose to it, like either just reading for the sake of filling sadhana card or giving some class or just gathering some information like that. But this will not work for long. So as we are progressing ahead, we have to think in that direction that I am not this body, I am spirit soul. Then only you will realize, Array, what nonsense am I doing in this world? I must go back to spiritual world. But right now I am caught up in this body. So I must work hard to get out of this world. Like I have told many times this example, when I was in hospital, I was mother was getting treatment, and lot of days has passed. I was just staying there. Then from window, our room was in ninth floor. So from window, I was seeing all these people traveling on streets, like going, and I was thinking how free they are, how nice they are. They are so much their freedom. They can move, they can walk, they can go anywhere. And see, I am caught up here. Although I can also move and walk, but I am so caught up in a situation where I cannot move out. I have to be here anyhow. Long back. This was 2017 when I just came 1 year back to Mumbai, and not many friends, not many devotee associates, nothing was there. So, but at that time, I realized a deep within my heart that I am actually not this body. I am a spirit soul, and somehow that I have been caught up in this body, and because of this body, I'm caught up in this place. Now, okay, whatever years are there in my life, somehow that I have to pass it on, but this should be my last life. So I just made a very strong resolution, and then a kind of great detachment, and this comes my heart. Just like you see this Pingla story we read now. This happens. So this Pingla, you know, this prostitute, so she was uh, waiting, but not getting any customer, and finally she got detachment. So this detachment from this body must come, you know, when we are in such a state of condition. Like yesterday, I was sitting in train. Then I was thinking, Array, what is this body? Not outside we are feeling too hot. Inside there is AC compartment feeling too cold. I forgot to bring sweater and something, but it was too cold there inside. So I was thinking, Array, what is this body? No temperature suits to this body. Everywhere we are feeling discomfort. You know, this Adi Daivik, Adi Bhautik, Adhyatmik clay, so much. This is the you may think that Prabhu, this is very pessimistic, but this is reality. This is realistic. See, अभी थोड़ा बारिश हो गया वहां पर तबीयत खराब हो जाएगा फिर ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो गर्मी लग रहा है so this body is just horrible you know so we can only practice bhakti when we are on the level of soul when we at least think that I am spirit soul I am part of Krishna part and parcel of Krishna I am supposed to be happily be with the Krishna in spiritual world what nonsense am I doing here you know so that eagerness that urge has to come in our heart that oh I have to go back I have to go back I have to go back then when you read scripture with eagerness you will see that you will feel a great connection with scriptures Gita Bhagavatam then like when Sanatana Goswami tell Madeka Sango Madeka Bandhu how is he able to tell that because he's feeling deeply connected to Shastras why we are not feeling that because we are more deeply connected to this material world
We are so much connected to the outside world. So many people, so many things, so many of our thoughts, but we are not connected to Krishna very strongly. Not connected to the real thing, which is our true identity. We are not connected to that. That's the greatest irony, and that's the greatest uh, mishap, or you can say the calamity in our life. Although we know this thing, Janiya Sunya Vishakhainu. So that's why when we read scriptures and when we come across the topics like this, that a great urge should come in our heart. Oh Lord, why did I got separate from you? I should have been with you. You are my master. I'm supposed to serve you happily in the spiritual world. Why did I came here? So then you will feel that urge to go back, go back, go back. Okay. So this was for I identity. Huh? So let this be clearly impressed in our mind that I am not this body. And this body somehow that I have got captured here, whatever 30, 40 years I have to spend here, more, whatever there. But my goal is fixed up. I have to go back to Godhead. Just like Jada Bharat. Although captured in the body, whole life is ideal example of internalizing Krishna consciousness. Whole life, he spent without disclosing his identity itself and internally just strengthening Krishna consciousness. So we also should do like this, strengthening our Krishna consciousness internally, becoming more and more stronger and stronger, more detached from this world and practicing internally, becoming more stable, stronger, committed, dedicated devotee, and then trying our best to achieve Lord's mercy, to get the grace of Lord. All right, let's move to the next T, two duties. If you can share with them, Prabhu, try out. Okay, I think he's not to share. Let me read this. Sharing. Yes. Read somebody, two duties, 31 to 53. Anyone? I'll read, Guruji. Yes. Two duties, 31 to 53. Knowing your identity helps us clearly define our purpose in life. Dharma loosely translates as duty, but in a deeper sense refers to intrinsic characteristics and qualities of something that cannot be avoided, neglected, or negated under any circumstances. On one hand, the embodied soul has a swadharma, a worldly duty which consists of responsibilities towards family and society. On the other hand, the soul has a Sanatan Dharma, an eternal spiritual duty which comprises of one's relationship with God, nature, and all spirit souls. One must execute these two dimensions of Dharma side by side, finding a life of integration. Krishna beautifully explains. Next page. Next page, Puji. Uh, I think उनका net हुआ है. Okay, I read. Krishna beautifully explains the activities and mindset of the spiritualist who is alert to both duties and who thus leads a balanced and progressive material and spiritual life. Yeah, see, it is coming. Anyhow, we have read it. Yeah. So, so Krishna talks here in the verse number 31 to 53. So basically, this second chapter of Bhagavad Gita, it is a summary of the whole Bhagavad Gita. So in the third part of it, which is this section 31 to 53, Krishna talks about Karma Yoga and glimpses of Jnana Yoga also. So like here comes this verse 2.47. Karmani vadikaraste ma freshu kadachana ma karma falahetu mate sangusta karmani.
So basically talks about Niskam Karma Yoga. So that's why this topic is being two duties. So we have two duties in life. One is our conditional duty and one is constitutional duty. So conditional duty is towards our family, job, nation, whatever, all the things we are surrounded with. And the constitutional duty is duty towards Krishna, God, towards we being a part and parcel of Krishna, like that. So who is an expert spiritualist who can balance the both? So if you can balance it nicely, then you can remain in life peacefully and practice the path of bhakti. So basically, this is uh, more at for one who is acting for a grahast, opting for grahastha life. He needs to understand and how to balance it. If you don't understand this thing and practice this thing, you will do chaos in your spiritual life. Because see, out of conditional duty and constitutional duty, always remember we will tend to compromise our constitutional duty always, always, because we don't feel the dire necessity of it right now. We are not in that state of consciousness right now that we will feel that urgency of spiritual life. Very few, very few who feels that my spiritual life is more important for me than anything else, you know. But most of people under the influence of illusory energy, they may opt to be inclined more towards conditional duty than spiritual duties. That's how the world is made up. That's why Krishna tells balance it, balance it. If you don't balance it, then you will uh, not be able to peacefully live in both the places. So especially in the this is meant for devotees who are right now studying, doing job, and then practice spiritual life. So you have a great job ahead. Means in terms of balancing both the things, it's not an easy job. It's difficult. It's difficult. So don't take uh, your ongoing life so cheaply and just let it go like this only. Plan it properly. You know, uh, be Krishna conscious, and be inspired to work. Do your material duty also with full honesty and sincerely. I know it's difficult, but it's an austerity. This is an austerity because right now we are not in a situation to leave everything and come. So that balancing thing he talks about in the verse number 31 to 53. And this is a summary part. So you can study, you can go and study Bhagavad Gita chapter 2, these verses, and just get the glimpse of this thing, what we discuss about. Okay, let's move to the next final one, Atmanam 54 to 72. Okay, if you can share, take a little time because the internet is not there in temples. Yes, yes, who will read? Ankush, Pro, you read Atmaram. Prabhuji, I'm quite outside of the room, so I can't read it now. Okay, okay, okay. Hare Then Krishna Prabhuji, can I read? read. Two duties, 31 to 53. Uh-huh, N- No, Atmaram, Atmaram. Prabhuji, actually टू ड्यूटी से ही शो कर रहा है इस पे स्क्रीन पे एक मिनट वो कर रहे He's sharing. So we'll have meeting after that. Yes, read. Atma Rama 54 to 72. One who learns this art of living elevates their consciousness and become an Atma Rama, a spiritually realized soul
who find pleasure in the self. Arjuna is interested to know how he can identify such a unique soul. Krishna explains that the Atma Rama is unaffected by happiness or distress, gain or loss, honor or dishonor, transcending the dualities of this world. Such a spiritualist rides himself of qualities such as fears. Words such a spiritualist ride himself of qualities such as fear, attachment, and anger, and remains absorbed in spiritual joy and transcendental consciousness. The Atmarama ultimately enters into eternity, freeing himself from the imprisonment of the material world. Oh, thank you. So Krishna talks about uh, this is Atmaram, the selfless soul. Chitakasya ka bhasa kim prabhasita kim asita. That verse where Arjuna asks, how do I identify a self-realized soul? Then Krishna replies that sama sukha dukkhena man apmana. So this person, he is not affected by worldly honor and dishonor, heat and cold, and he's situated in the self. And then he tells that Kurmangani Sarvasaha. All these verses comes, and there only this verse comes that Dhyan Dhayato Visyam Pumna Sangas Sukjayati. So all those verses come. This very beautiful section, 54 to 72. So you can remember that this section talks about Atmaram. Atmaram means self-realized, self-satisfied soul. So then at the end, 72, Krishna tells that such a soul, Esa Sthiti uh, Brahman Gachati, tells that any person who lives with this kind of mentality in this world, at the end, achieves my transcendental abode. So, of course, we are not on this platform right now, but we have to practice. The only thing in our hand is practice. Practice will make us solely perfect and gradually perfect with Krishna consciousness. And that practice, to what to practice, that is given in Shastras. How we should conduct our life, how we should live. So right now, we should not be discouraged that, I am not such an elevated person. Is no problem. But slowly reading, practicing, going on, these inherent qualities will come up in due course of time by practice. It will happen. So that's why uh, uh, this second chapter speaks the whole summary of Bhagavad Gita, and these final slokas are very nice. So you must read. Why I am taking these classes, this thing, because I want that all of you should become very expert in at least Bhagavad Gita. This is very important for all of us, because now in future we are all going to preach Krishna consciousness, and we must know at least Bhagavad Gita, what is written where, at least in summary, and at least we must memorize some slokas from Bhagavad Gita, some of our favorite slokas. So I have made a 21 sloka kind of I have chosen from Bhagavad Gita. So on these 21 slokas, I will take classes, and I want to create a mentors group, the preachers group, preacher training group, in which I will uh, let all of you memorize these 21 slokas and speak about it. So I'm thinking to start that soon, so that at least you know the top slokas of Bhagavad Gita, you know the verse, you know the meaning. So anywhere it comes, you can quote it and discuss about it. So you can be ready with at least 21 classes you can give. So any batch of people you come to you, you can do this. So I have made already the booklet, I have made it, and we will start practicing it soon. Okay. So we'll stop here today because we need to have a preaching meeting regarding Panvel, village college preaching. So we'll stop here. Any questions or comments anybody wants to ask regarding this before we start meeting? Anything? All right. Hare Krishna, No Prabhuji. problem. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Uh, Then
प्रभु जी, हाउ टू कंट्रोल लाइक ग्रीड, और चाहिए उसको कैसे कंट्रोल? Okay. To control greed, you need to be satisfied with what you have, and to be satisfied materially, you need to be elevated to the spiritual platform. So because we are not spiritually satisfied, that's why that lack of spiritual satisfaction comes as material greed. So make your life spiritually surcharged and happy. If you're spiritually happy, material demands will go down. At least personal demands. There will be demands from family and other things that may be there, but personal demands will go down drastically because uh, the spiritual happiness which we get by practicing bhakti seriously and sincerely, nothing in this world can give that kind of happiness. Not possible. Not possible. But you need to experience that, realize this to achieve this state. So it's not easy because down outside the world, we see people just bragging, my God, working so hard to get something which is temporary. Very difficult to convince them. This thing. The mind is just Paramatmaka. But we are, and if you remain in such a situation amongst them, so your guilt will also increase. So increase your association of devotees, increase your spiritual intake, increase spiritual involvement, engagement. Then you will realize this point. Okay. थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और ये जपा, एक जप मतलब डेली जपा का एक जपा है, तो उसमें अगर जैसे अलग अलग तपस्या, जैसे डीटी के सामने प्रे करना है, तो फिर वो अगर ये हो रहा है जपा से ज्यादा, जो सूटेबल है वैसा है, या फिर जपा का ही करना है मतलब? So japa, you cannot compromise japa for anything else. Chanting fixed number of rounds, ideally by now must be chanting 16 rounds. So don't compromise chanting. Chanting is the first thing we must do. If other all things we can put on hold, it's okay. But chanting we cannot compromise. That's not possible. We must chant our prescribed rounds every day. That is the first service of spiritual master. We cannot compromise chanting at any cost. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। Okay. Okay. So Hedamata Prabhu, we can have meeting. Yes, Fuji. So who all will be there in meeting? You tell. I would like to request devotees, those who are uh, for our Panvel preaching, they can stay, and others they can leave this meeting. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, do I have to stay or I have to left? Because I am in PTC, I am going Utkarsh, but I don't know I have to stay or I have to left. No, Swamru, you can leave. You cannot be part of that meeting. You are Okay already प्रभु going जी, to meet. You can leave. ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। Okay. So let's start very quickly. I will speak for 5 10 minutes and then Sadhana Priya Prabhu and Vedamata Prabhu, they can continue discussing. So, so Prabhu's, first of all, thank you very much for being a part of your club, and all the devotees are working hard to make it more and more, uh, strengthening it and
preaching and doing a lot of services. Already we have started a Sunday program, youth program that is also going nicely. The mother who is leading it and doing it nicely. But now we need to have a systematic college preaching, which is a which uh, according to Pune standard, and I am seeing even Jabalpur the results are coming now. So because the kind of training which devotees get while staying in voice or base, it's completely different from the one which all of you have got by staying in home and coming. So, uh, of course, you're also practicing nicely, but that kind of training you are not getting, because that homely atmosphere sometimes we are very casual in our practice, and we just come once in a week to temple. So that daily practice of chanting in devotees, deity worship, preaching, all these things that is lacking in campus preaching thing. So, but still, a lot of devotees have become from there only, like our Sadhana Prabhu is a product of campus preaching only. His home was here, it took a very nicely, and now many devotees are doing very nicely. So I'm not underrating it, but still, when uh, when devotee they stay together and they practice for 2 3 years under stable guidance of counselor, and they are more watched of, like they are, we can see them what they are doing, and also their progress is little faster. This has been seen, and Radheshampu has preached for many many years and produced miraculous results because of this preaching. All of you have gone to Spurti Camp also, you have seen this style of preaching. So now we want a setup where we want to preach in line with Pune thing. So we want to attend all the camps organized at Pune, Sankalp Spurti, Utkarsa, and every year we should bring send boys for Utkarsh camp and like that. So we will do that. So keeping that in mind, we are going to start our this year preaching in Pillai College. So as I came to know, there is an hostel, boys hostel there, and also there is a campus college there. So some of our devotees, Karan Crew is there, part of it. Mukesh Paul already passed out. Karan and Bipin Crew, now they are currently studying there, and so they will help us. And I know as we preach, more and more people will be connected, because anyhow in Mumbai, somehow other people are know ISKCON, people are connected to ISKCON. This is advantage, disadvantage also. So that will work out. So I want a solid team to work on this, and it's not a joke. This is not campus pitch. This is really requires hard work, committed and dedicated work. So you have to keep subsequent programs, MMCs, every weekend program, and lot of things are there. Lot of money is also involved. So this requires money. This requires manpower, time, resources, many things. But the result comes very quickly. अगर एक अच्छा बैच आता है ना, तो फिर वो सब्सिक्वेंट पूरा 5 10 साल पूरा अच्छा, बहुत अच्छा पिचिंग होता है, तो बहुत सारे ड्यूटीज बनते हैं. So we are looking forward in that direction, and I'm very hopeful, because as of now you all have got training, lot of trainings, lot of exposure, and so you know many things now in Krishna consciousness. So and it will be very helpful for our devotees here also and after also. So I would request Sadhana Priya Prabhu to help in this project, because since he has been in Pune from so many 3 4 years, and he's been actively preaching there, and he knows all the uh, loopholes where we can fall short, or what to do at what time. And since he's from Mumbai, so he knows the mentality of Mumbai boys also. So Sadhana Prabhu will be a big asset in this preaching, and of course the project will be led by Hridaya Madhaprabhu, because one brahmachari should be actively involved in that. So from temple side, whatever is required, and then connecting with the brahmacharis in Pune. So now I want that Hridaya Prabhu should reach out to Pune devotees, Pune voice culture, being in touch with Antati Prabhu and Amsu Prabhu, and all the voice things, whatever happens. Since so many years, we are not able to do that because of temple and so many things were there in Kharghar. But now I want to really make one good project for pleasure of Adesham Prabhu. And in future, I want to invite him
or if we make a very good base and this thing, I would like to invite Prabhuji and many preachers from Pune. If we have 30, 40 boys like that, so then we can have a good program in Panvel, Kharghar. And for your information, we are going to launch a very big program in coming 2026 February. A big Pandal program I am planning, Krishna willing, we'll do for 4 days. So there I was thinking to do one youth program also, big program one day for youth. I'm just planning it. If it comes out nicely, then we'll do it. So by that time, if we have some preaching in Pillai College, so that will also help us in that regard. So that's why my sincere request to all of you is that please work hard, and this will be a very good offering to His Holiness Gopal Krishna Maharaj, because he wanted youth preaching. He called us for youth preaching only from Pune, but somehow that we could not do it in the way he wanted, in a big way, uh, because of so many things. But now I want to do it. I want to do youth preaching very nicely. And whenever I go to Pune, so many devotees they tell me that, Are, because I was also active youth preacher in my voice days, and I had a desire to make a very nice voice setup for pleasing Radheshyam Prabhu, but I could not do it somehow. That now, of course, some things, some way we are serving ISKCON, Guru Maharaj, because Maharaj wanted something to do. But now we have got resources also. We have got so many of wonderful duties like all of you, and temple also has got opened. Things are little more stable, and we have resources. So we must preach now very actively and very dynamically. So please help in this regard and cooperate with each other, coordinate nicely, and strategize it, plan it nicely, and you will see in the coming years wonderful things will happen. And Krishna will send many, many good souls from Mumbai itself. Like Sadhana Prabhu is one example, a Mumbai product, but very nice devotee and practicing so nicely. And all of you also. So please help in that matter. Okay, I'll stop here. The Mother Prabhu, you can add something. Uh, Thank you so much, Puji, for allowing me to speak. Actually, what Prabhuji has said, it is very much inspiring for everyone. That His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he has he has sent Prabhuji and uh, other devotees for doing this task. So thank you, Prabhuji, for reminding this to all of us. And under your guidance, under your vision, we would like to work and serve. And of course, there are so many wonderful devotees, especially Sadhana Priya Prabhu, who has been well trained under you and also got nice experience of Pune pattern preaching. So it will be a great opportunity of learning and uh, contributing to ISKCON society in some way from our side. So thank you so much, Prabhuji, for your guidance and your valuable time. So, Hare Krishna. Okay, thank you, thank you. Yes, Sadhana Prabhu, you want to add something to this? Yes, Prabhuji. Actually, I won't add anything regarding this. मतलब आपने already inspire कर दिया सबको. तो I'll just मतलब जो हमारे क्वेश्चन थे जो डिस्कस करना था Prabhuji, मतलब कि कैसे हम इसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसी के बारे में ही जो है थोड़ा सा बात करेंगे. So that all of you can discuss, because I have to go for another thing here now. So this internal meeting of the procedure and all details, you all can continue with that. Okay. So I think I'm not doing that thing. In case you want my involvement in something, then you can let me know, Prabhuji. Yes, sure, Prabhuji. Like one of our devotee can write all the points, bullet points, and Yes. we'll share you on the group. And if you Correct, feel correct. any changes and anything, you can later guide us. Yes, minutes of meeting. Yes. Karan Prabhu can do that. Okay, yes. Okay. Okay. Karan Prabhu. Yes, Prabhuji. So actually, Karan Prabhu will be, the chief coordinator for this
whole project. Like, so Karan will coordinate with you, Sadhana Prabhu, and पिचिंग कोऑर्डिनेटर प्रभु जी, पीसी yeah, हमारे PC, पीसी बनेंगे. yes, PC. Very well. And Very. OC will decide once voice comes, then we'll decide OC and other things. But the preaching coordinator for this project will be Karan Prabhu, and because he's there in that college and he also knows many things there, so but does he needs little guidance? So Karan Prabhu, you will coordinate between Ridhamada Prabhu and Sadhana Priya Prabhu. Be in touch with them, when to do program, what time to do program, whom to call, all these things, and you be actively involved in that. Okay, Karan Prabhu? Yes, yes, Prabhu. Ah, fine. So then, so I am leaving this meeting because I have to go for other thing, and you please continue with the details. Okay? Yes, थैंक यू Vijay. प्रभु जी, थैंक यू Thank फॉर you योर so much. गाइडेंस. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri हरे Prabhupada ki jai. कृष्ण. जय. Yeah. ठीक है, हृदय माता प्रभु स्टार्ट करें. Yes, Vijay, please go ahead. हाँ. Karan is ready with some notes making thing. यस यस प्रभु जी. हाँ. प्रभु जी, मैं चाहूंगा कि अमन प्रभु ही कुछ नोट्स बनाए, बिकॉज अगर कुछ मुझसे छूट गया रहेगा तो वो भी कर सकते हैं उसमें. Yes, आपकी इच्छा. अमन को भी लिख सकते हैं. यस. Okay. Vijay, you can proceed with the. हाँ यस प्रभु जी. सो अभी मुझे इतना बताइए प्रभु जी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिल्लेस कॉलेज में हैं अभी, या पिल्लेस से पास आउट हो चुके हैं वो लोग. आप चैट्स, अगर आप बोलना नहीं चाहोगे तो आप चैट्स में लिखोगे तो भी चल जाएगा, ताकि हमारे पास उसका नोट डाउन करने में इजी पड़ेगा. ओके, बिपिन गुप्ता प्रभु आप लिख दीजिए, आप चैट्स में लिखिए कि आप कौन से ईयर में हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं अभी. ठीक है, वो लिख दीजिए कि आप अभी कौन से ईयर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, जो जो अभी पिल्लेस में है वो. मुकेश पू जो है पास आउट है पिल्ले से. So can we involve him also because यस उनके यस काफी. यस, वी कैन इन्वॉल्व पास आउट स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम. हाँ, वो करण अच्छा है प्रभु. पास आउट. यस यस प्रभु जी. मैं ओके, उनको कॉल करता हूँ. I will call him. तो और करण को आप भी उधर ही है. यस प्रभु जी. जी प्रभु जी. ओके, आप कौन सी ईयर में ब्रो? प्रभु जी मैं भी टीवाई में अभी जस्ट इंटर कर रहा हूँ. बुकिंग चल रहा था. ओके, अभी तो पिल्ले कॉलेज के एक्स है ना, एक स्टूडेंट. तो आप ज्वाइन करेंगे क्या ये साधना प्रिय को आपके? ठीक है, करण हरे प्रभु है. कृष्णा. हाँ यस प्रभु जी बोलिए. साधना प्रभु, like Mukesh who may not be like fully because he will be serving here, so we need to check with Prabhuji, Sauri Chetan Prabhuji about him. But like he will be able to help with contacts and sometimes partially like he may help नहीं, गॉट इट. part नहीं ब्रो, time. हमें खाली इनिशियल डेज में हेल्प लगेगा, खाली एक बार कॉलेज में एंटर करने Yes, के लिए. yes, ठीक है, बाकी yes, and बाकी he has कुछ good इतना जरूरत rapport. पड़ेगा नहीं, बाकी सब हमारे बच्चे संभाल लेंगे. Okay, बढ़िया. Yes, I'm calling. Just he will be joining in 2 max 5 minutes. ओके ब्रो जी. सो वही बताना था. तो कुछ आप करण प्रभु और जो डिवोटीज ऑलरेडी है पिलेज में, उनके लिए कुछ टास्क है. जो बाकी डिवोटीज है वो लोग खाली सुन सकते हैं, अभी तक है नहीं यहाँ पे पिलेज में, अगर आप नहीं हो तो. परंतु आप देख सकते हो कि क्या क्या करना है क्या नहीं है. तो इवेंचुअली आपके भी रोल आगे आएंगे, बट अभी इनिशियल फेज में तो क्या बोलते हैं, उन लोगों का रोल रहेगा. इनिशियल मतलब जब तक हम परमिशन नहीं लेते तब तक उन्हीं लोग का रोल है जो कॉलेज के अंदर है. तो अंदर में से आपको क्या करना है, करण तो आप नोट डाउन कीजिए, और विपिन को हाँ आप भी यस प्रभु सुनिए जी. ध्यान से. अब आपका रोल ये है प्रभु कि आपको जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. जैसे अभी आप लोग के कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से नॉर्मली, ये वाला पिलेज होगा ना, कौन सा वाला, पनवेल वाला. यस यस प्रभु जी. तो इसमें इंजीनियरिंग तो नहीं है? इंजीनियरिंग तो नहीं उसमें प्रभु होगा जी. आगे वाले में, रसायनी वाले में. नहीं प्रभु जी, इसमें इंजीनियरिंग भी है, प्लस अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है इसमें. ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन, यस. आप क्या करना, सबसे पहला काम करना है आपको. आपको मुझे ना डिपार्टमेंट की लिस्ट ला के देनी है कि हर एक डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में कितने एडमिशन होते हैं. ओके ओके ठीक प्रभु है, जी. टेक ऑफ. फर्स्ट ईयर में कितना बच्चे आते हैं. जैसे भी आप भी सीएस में थे, तो आपके डिपार्टमेंट, अगर मान लो हम आपका डिपार्टमेंट टारगेट करते हैं, आपका कौन सा है करण ब्रो? मेरा प्रभु जी सीएस डिपार्टमेंट है.
और विपिन प्रभु भी सीएस है, दोनों के दोनों टीवाई में थर्ड ईयर में। यस यस प्रभु जी। हाँ तो बेस्ट है। तो फिर हम अब आपके डिपार्टमेंट का जो इनटेक रहेगा फर्स्ट ईयर का उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ओके। हम यूजुअली फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। क्लियर। अब मेरे को बताइए फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे आते हैं आपके सीएस डिपार्टमेंट में? CS डिपार्टमेंट प्रभु जी ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स है, मतलब ठीक है, 200 इज अ गुड नंबर टू 180 स्टार्ट। टू, यस 180 टू 200। ठीक है चलेगा। ठीक है तो गुड। अभी आप में से किसी ऐसा कोई है, ठीक है, तो आप मेरे को क्या करना, सारे जितने भी मेन मेन डिपार्टमेंट्स हैं आपके कॉलेज में, ठीक है, जो मेजर डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपका टच हो या हमारे कोई डिवोटीज उसमें पहले रहे हो या है ऐसे, या सीएस हो गया, आईटी हो गया, ठीक है ना, ऐसे कोई डिपार्टमेंट्स, तो वो सभी यस डिपार्टमेंट्स आपको से इंजीनियरिंग में हो नॉर्मल बीएससी में हो? प्रभु जी मैं नॉर्मल बीएससी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग का भी पता लगाओ, इंजीनियरिंग का या सीएस और आईटी का, ठीक है, और इसका भी आप यस पता प्रभु जी। लगाओ, ठीक है। एक्चुअली प्रभु जी हमारे जो मुकेश प्रभु है वो वहाँ से इंजीनियरिंग किए, तो उनको अच्छे से उसमें मालूम रहेगा अगर हाँ नहीं, वही मुकेश तो प्रभु वो फिर वो ज्वाइन। आपको टास्क में दे रहा हूँ ना, वही आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, आप बैठिए मुकेश प्रभु के साथ या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है जो उसमें है कोई उनके साथ मुकेश को है बैठिए। ज्वाइन ओके, जस्ट मुकेश प्रभु इज ऑलरेडी ज्वाइन। अरे मुकेश तो प्रभु कैन यू हियर मी? वी कैन डिस्कस अभी, अगर कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन अगर, या फिर आप कुछ गाइडलाइन टास्क देना चाहते हैं मुकेश नहीं को? बुझे, अभी हम क्या करते हैं, अभी खाली मतलब मैं बता दूं कि क्या क्या टास्क है क्या है, बिकॉज ये सारी चीजों को हमको क्या चाहिए ना, ऑन मतलब हमें एक प्रॉपर ये चाहिए, पेपर के ऊपर नंबर्स चाहिए। अभी ऐसे मतलब ये नहीं करेंगे हम, अभी इस खाली मैं बता देता हूँ, अब ये लोग क्या करेंगे, नंबर्स लेके आएंगे प्रॉपर, तो हमें पता चलेगा कि किस में कितना इंटेक होता है, और हर साल इंटेक चेंज भी होता है ना। तो आप क्या हाँ कीजिए, मुझे फर्स्ट ईयर का इंटेक बताना है, इंजीनियरिंग का और नॉर्मल का, जो मेजर ब्रांचेस है जो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईएनटीसी हो गया, ऐसे। क्लियर। तो इन सब का जो है आप ओके क्या प्रभु कीजिए, जी। जो टेक्निकल ब्रांचेस होते हैं ना, टेक्निकल ब्रांचेस को हम ज्यादा टारगेट करने का ट्राई करते हैं। तो जो भी टेक्निकल ओके ब्रांचेस है, ईएनटीसी हो गया, अगर आपको हेल्प लगेगा कौन कौन सा, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नाम भेजता हूँ टेक्निकल ब्रांचेस की, वो उन ब्रांचेस का फर्स्ट ईयर का इंटेक जो है पता लगाइए, ठीक है, और वो जो है उसको एक शीट में लिख के रखिए, है ना। तो पहला चीज तो आपको ये करना है, ठीक है करण ब्रो, समझ में आपको? हाँ यस प्रभु जी। ओके विपिन ब्रो, ठीक है, तो बढ़िया आगे। यस, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि यस कितना कितना ये है। अब उसमें से जो है क्या बोलते हैं, आप जो है नेक्स्ट चीज ये पता लगानी है हम लोगों को तो जैसे आप में से किसी का एचओडी में, जिन जिन के पास जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा ना कॉलेज में, कि भाई मतलब आप बोल दो ऐसे लिख देना कि भाई समझो विपिन प्रभु बोलते हैं कि प्रभु मेरा एचओडी से बहुत अच्छा कांटेक्ट है, या मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाले सर को जानता हूँ, या मेरा फ्रेंड है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाले सर को अच्छे से जानता है। तो अगर आप तो ये तो बात कुछ बोल रहे हैं आप? यस प्रभु। कुछ बोल रहे थे दिमाग आप? ओके ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि आप लोग क्या कीजिए, अगर आपकी कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो पीओसी जो भी आपके कॉलेज में, ठीक है, वो आप लोग क्या कीजिए ना, मेंशन कीजिए कि भाई मेरा जैसे आई एम है ना, ऐसे सो एंड सो आपका नाम लिखिए, और आप मेंशन कीजिए कि भाई मैं जो है क्या बोलते हैं कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वालों को जानता हूँ, या मैं वाइस प्रिंसिपल के पास जाके परमिशन ले सकता हूँ, या वॉट एवर जो भी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप एचओडी को अच्छे से जानते हो या किसी को अच्छे से जानते हो, ठीक है, कॉलेज के अंदर वो सब चीजें जो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी जो होंगे ना वो भी लिखेंगे, तो थोड़ा हमें हेल्प होगा। तो ओके एक प्रभु जी। सेकंड चीज ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और पहला तो हो गया कितना ये रहता है, फिर कितने इनटेक है। थर्ड आएगा डेट्स, कि कब कॉलेज में जो है एडमिशन के डेट्स कब होते हैं। जब बीएससी शुरू होता है तो बीएससी का एडमिशन का डेट क्या होगा, एडमिशन होने के बाद बच्चे कॉलेज में फर्स्ट डे से कब आना शुरू करते हैं, टेंटेटिव डेट हर साल का फिक्स होता है कि भाई ये टेंटेटिव डेट है कि अगस्त में स्टार्ट होगा या इसमें स्टार्ट होगा। तो ये डेट्स आपको पता लगाने हैं कि भैया बीएससी वाले कब स्टार्ट होते हैं और क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग वाले जो है वो कब स्टार्ट होंगे। तो इनका जो है डेट्स आप पता लगा लीजिए कि फर्स्ट राउंड कब होता है, सेकंड राउंड यूजुअली आई थिंक थर्ड राउंड के बाद इंजीनियरिंग में हम लोग के यहाँ पे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, फिर फोर्थ राउंड जो होता है वो मैनेजमेंट वाला वो सब चलता रहता है बाद में, बट स्टार्ट हो जाता है थर्ड राउंड के बाद से कॉलेज। ओके प्रभु जी। हाँ, तो वो जो डेट्स रहेंगे ना फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेट्स वेट्स जो है ना वो आपको पता लगाना है कि डेट्स जो है कब से होंगे, ठीक है, कि कॉलेज ओके स्टार्ट कब प्रभु जी। होगा। ओरिएंटेशन का हेड कौन है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है हर कॉलेज में, आई डोंट नो आपके कॉलेज में कैसा सीन है, अब मेरे को पता ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है आपके? यस यस प्रभु जी।
ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह ठीक सब। है। तो हर कॉलेज में स्टार्टिंग जब होती है तो स्टार्टिंग में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें जो है कम से कम वो 3-4 दिन का चलता है। हर कॉलेज का अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर्स के लिए कम से कम, जैसे हम यहाँ पे जहाँ प्रीचिंग करते हैं पुणे में, तो पुणे में ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, मुझे इंजीनियरिंग का पता है तो, है ना, तो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 4-5 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में क्या होता है ना, वो बहुत सारे अलग अलग क्या बोल सकते हैं स्पीकर्स को बुलाते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के जो है क्या बोल सकते हैं टॉक्स देते हैं। कुछ कुछ टेक्निकल होते हैं, कुछ कुछ करियर बेस्ड होते हैं, कुछ कुछ माइंड के ऊपर या फिर क्या बोल सकते हैं हैबिट्स के ऊपर होते हैं। ऐसे अलग अलग उनको चाहिए होता है। तो कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कुछ करियर पे होते हैं, और कुछ टेक्निकल चीजों पे होते हैं। ऐसा अलग अलग होता है। तो हमें क्या होता है ना, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपने क्लब को पिच करने का, क्योंकि बच्चे नए नए आए थे, उनको पता नहीं कि कौन सा क्लब ज्वाइन करना है। कॉलेज में बहुत सारे क्लब होंगे। ठीक है, ये भी एक लिस्ट यस निकलवा प्रभु जी। लेना। अच्छा नाम याद, अच्छा याद आ गया मेरे को अभी, कि कॉलेज के जितने भी क्लब्स है ना, उसके बारे में एक लिस्ट मेरे को दे देना कि कौन सा क्लब है, वो क्लब करता क्या है, कैसे एक्टिविटीज करता है। और भले ही कोई लिस्ट में कोई बाकी क्लब्स होना हो, बट हमें मेजरली वो क्लब्स चाहिए जो कि क्या बोल सकते हैं टेक्निकल काम करवाते होंगे। और सेकंड चीज जो है क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी रिलेटेड काम कराते हैं। टेक्निकल वाले क्यों काम आते हैं, अगर बच्चा हमारा कोई अगर टेक्निकल क्लब्स में करता है ना, बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का। यूजुअली अगर मान लो कोई बच्चे ने टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर लिया, तो उसका बहुत टाइम जो है टेक्निकल क्लब में जाता है, तो हमारे क्लब्स में टाइम नहीं दे पाता। तो ये जो हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक सुप्रा करके क्लब है हमारे VIIT में, तो बच्चे जो सुप्रा क्लब में जाते हैं, वो बच्चों को रात को 8-8 साढ़े 8 बज जाते हैं कॉलेज से निकलते निकलते, तो फिर वो लोग हमारे MMC या स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पाते, DYS एंड ऑल। तो आप जितने भी यस। क्लब्स है ना, उनके बारे में एक लिस्ट बना लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि ऑल द क्लब्स इन द कॉलेज, और कौन से क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कितने एक्टिव है क्लब एंड ऑल, इजंट इट। और अगर आपके पास अंदर की ओके। डिटेल हो कि मॉनिटरी उनको कितना मिलता है कॉलेज की तरफ से, बिकॉज कब कुछ कुछ क्लब को मॉनिटरी भी मिलता है कॉलेज की तरफ, मतलब पैसा भी मिलता है क्लब चलाने के लिए, कॉलेज वाले देते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा ओके इंटरनल प्रभु जी। डिटेल्स आप निकाल सकते हैं अगर है पॉसिबल तो। तो ये तो हो गया इसके बारे में, क्लब के बारे में कि कितने क्लब्स है ना। फिर उसके बाद आपको डेट्स पता लगानी, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होता है, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या हम हमारा स्पीकर दे सकते हैं क्या, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत, या मतलब कोई क्लब्स अपने अपने स्पीकर बुलाते हैं क्या। यूजुअली कुछ कुछ क्लब्स अपने अपने एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या क्लब एक्टिविटीज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पॉसिबल है क्या, ये भी आपको पता लगाना है। ओके प्रभु जी। ठीक है, क्लब एक्टिविटीज, मान लो कोई एक क्लब फॉर्म किया हुआ है, और वो लोग अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है क्या, ये भी पता लगाना। ठीक है। ठीक है प्रभु। हाँ, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लब्स कौन कौन से हैं, बच्चे कितने आते हैं, स्टार्ट कितने टाइम पे होगा। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें ये आप लोग पता लगा लीजिए कि क्या एग्जाम के डेट्स क्या क्या होते हैं सेमेस्टर वाइज। आपके सेमेस्टर्स जो है वो निकाल के रख लेना, क्योंकि हमें वैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यूनिट टेस्ट कब होते हैं, सेमेस्टर कैसे होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर के टाइम पे फिर हमारे कैंप्स और क्या बोलते हैं कितना जल्दी हमको रन कराना है, कितने डिवाइस लेने हैं, ये करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज का ओके प्रभु टाइमिंग, जी। लेक्चर का टाइमिंग, हाँ तो ये लिख लेना कॉलेज का, ये एग्जाम का टाइमिंग, एग्जाम के क्या क्या टाइम्स होते हैं, यूजुअल टेंटेटिव टाइमिंग्स। मोस्ट ओके प्रभु जी। इंपॉर्टेंट बच्चों का स्केड्यूल क्या होता है, मतलब अगर मान लो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो कितने बैचेस में आते हैं, मतलब मान लो कि जैसे अभी वीड हम जिस कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं वहाँ पे 2 बैच होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट होता है, 2 शिफ्ट होते हैं। तो आपके कॉलेज में खाली हाँ। मॉर्निंग शिफ्ट है, खाली इवनिंग शिफ्ट है, या सिर्फ आफ्टरनून शिफ्ट है, या बच्चे जब आते हैं फर्स्ट ईयर के तो कितना टाइम कॉलेज में स्पेंड करते हैं, मतलब लेक्चर्स कितने होते हैं, ऐसा। तो वो आप थोड़ा पता लगा ओके लेना कि प्रभु भाई जी। मान लो कि बच्चों का रोज 12 बजे कॉलेज शुरू होता है, 4 बजे खत्म होता है, या सुबह 7 बजे शुरू होता है, 12 बजे खत्म होता है, जो भी टाइमिंग रहेगा उनका पता लगा लो। यस प्रभु जी। तो टाइमिंग हमें थोड़ा आइडिया रहेगा तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, हमारे सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। Because जब कॉलेज खत्म हो जाता है बच्चों का, मान लो किसी का 4 बजे कॉलेज खत्म हुआ, तो हम 4:30 बजे फिर क्या करते हैं, कॉलेज का ही एक क्लासरूम आस्क करते हैं कॉलेज से, और फिर वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे डिवाइस के प्रोग्राम्स रखते हैं। ओके प्रभु जी। ठीक है, और सैक करके एक चीज होती है कॉलेज में, स्टूडेंट एक्टिविटी सेल। ठीक है, तो उसमें जो है हमें मतलब जो क्लब्स होते हैं उनको एक क्लासरूम्स मिलते हैं, कि मतलब ये क्लब वाले क्लासरूम्स यूज कर सकते हैं, या ऑडिटोरियम यूज कर सकते हैं क्लब वाले। तो कौन से ऐसे ऑडिटोरियम्स है जो क्लब एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल रहेगा तो अच्छी बात रहेगा, वो भी काम आते हैं ऑडिटोरियम्स और क्लासरूम्स। ओके प्रभु जी। तो ये सारी मेन मेन चीजें हैं जिसके बारे में जो है आप लोग पता लगाइए, और इनके नंबर्स और जो भी सब चीजें उसको एक अच्छे से शीट में बनाइए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन में जो है हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी प्रभु जी। और ठीक है, तो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बोलते हैं कैसे जो है
ये सब चीज़ों को हम आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज अगर हमें एक बार डाटा मिल जाएगा बहुत सारा, तो फिर जो है हम क्या बोलते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके प्रभु जी। ठीक है, हाँ, मतलब सागर मेरे से पास तो प्रभु, ये सब चीजें थी। क्या बोल रहे प्रभु जी, हाँ, मेरे मन ये को। wants to add something regarding forming a club. प्रभु आप बोलेंगे कुछ? हाँ प्रभु जी, मैं ही बोला था कि हमारे कॉलेज में ना, पिलेस कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं। जैसे एक क्लब हाँ है हाँ जो ज्वाइन किया था, उसका मैं पावर ट्रेन में, मैं ये था, पावर ट्रेन का मेंबर था मैं। सो वो स्पार्क रेसिंग टीम, तो ऐसा एक क्लब था। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, और एक ऐसा क्लब है ना जो कॉलेज में बहुत सारे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गया, और ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करता है। तो हम है ना, हमारा एक क्लब फॉर्म करेंगे, और हम हमारे क्लब को उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। सो उन ऐसे तरीके से हम उनके कॉलेज में फिर लॉन्च कर सकते हैं कोलैबोरेशन के जरिए। कोलैबोरेशन भी चलता है प्रभु जी क्लब में ना, ये भी को हम कर सकते हैं कि हम कोलैबोरेट करके अपने क्लब को उनके साथ कर सकते हैं, या फिर हम हमारा नया क्लब फॉर्म कर सकते हैं पहले। ठीक है, वैसा करेंगे। यस मतलब यस मेन तो यस। हम लोग यूजुअली तो हम क्लब फॉर्मेशन के थ्रू ही एंटर करते हैं कॉलेज में, कि हम क्या करेंगे, जैसे आई टेल यू, क्लब हम यूजुअली क्लब। क्या करते हैं कि कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, हाँ उनमें हाँ। से कोई एक बच्चा जाके जो है बोलेगा कि हम जो है मैम ऐसे ऐसा क्लब फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। आप ऐसा क्लब फॉर्म करें और बोला कि ये क्लब जो है ऑलरेडी एसोसिएटेड है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो वहाँ के जो ओके। सीनियर्स हैं उन्होंने हम वो हमें हेल्प करेंगे सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, हाँ तो हाँ हम हाँ। तो अब जो क्लब फॉर्मेशन का जो चीज़ें रहती है ना प्रभु, उसके लिए जो है हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे पहले अलग से कि क्लब फॉर्मेशन कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा डाटा निकाल लेते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर हम क्लब फॉर्मेशन हम्म। के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लब फॉर्मेशन हर कॉलेज में बहुत डायनेमिक होता है प्रभु। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इतने सारे ओके। कॉलेज में जाते हैं, किसी किसी कॉलेज में पूरा वाइस प्रिंसिपल से बात करना पड़ता है, डायरेक्टर से बात करना पड़ता है क्लब खोलने, जैसे हमारे VIIT कॉलेज में सीधा डायरेक्टर से बात करना पड़ता है। तो बहुत उनकी अपॉइंटमेंट रहती है। किसी किसी कॉलेज में क्या करना पड़ता है, जो आपके ये होते हैं, क्या नाम होते हैं, डीन होते हैं, उनसे बात करना पड़ता है। किसी किसी में स्टूडेंट एक्टिविटी के डीन अलग होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट अफेयर्स के डीन, उनसे बात करना पड़ता है। तो क्लब का जो ओवरऑल कौन देखता है ना, वो चीज आप पता लगाओ कि क्लब फॉर्मेशन किसके पास जाके किया जाता है कॉलेज के अंदर। आपके कॉलेज में स्टूडेंट कौन, मुकेश को कुछ आप पता होगा। हाँ, हमारे कॉलेज में प्रभु जी यही एचओडी के ऊपर फिर वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तक जाता है प्रभु जी, प्रिंसिपल को है पूछना ना, पड़ता है। ठीक है, तो उसके फिर एचओडी से उसके कुछ बाद फिर रिलेशन है अपना करण ब्रो, जानते हैं एचओडी, आपको देखे हैं एचओडी को भी। यस प्रभु जी, एक है बट वो दूसरे एक एचओडी डिपार्टमेंट के एक ही हैं होते होंगे मतलब। प्रभु जी, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता होगा, आपके भी CS का एक ही होगा। प्रभु जी मैं मतलब जानता जैसे, हूँ। हाँ जैसे मतलब मैं उसको जानता हूँ, जैसे कोई एक एक्टिविटी रन कर रहा है, हम्म, मतलब पूरे एचओडी को नहीं जानता हूँ, बट इसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। जो जैसे कोई एक एमएस का एक हेड है, उसको मैं जानता हूँ, वो उसके थ्रू मैं एचओडी के पास जा सकता हूँ प्रभु जी। ठीक है, वर्क्स, चलेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको बोला, आप लोग पहले POC निकालिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आप लोग निकाल लीजिए, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसी पे डिस्कशन करेंगे कि हम कौन कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप एक स्ट्रक्चर, हमारे पास एक डाटा रहेगा ना प्रॉपर, कि भाई ये सारा चीजें हमारे पास है, कि ये डिवोटीज इसको जानता है कॉलेज के अंदर, है ना, ऐसा, या कोई क्लब से कनेक्टेड हो, या किसी को अच्छे बंदे को जानते हो जो जिसका जैक हो अच्छा, तो आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करके आइए। फिर हम क्या करेंगे, क्लब यस। फॉर्मेशन पे नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना, वो पूरी सिर्फ क्लब फॉर्मेशन पे होगी, हम कॉलेज में क्लब फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अभी आप क्या ओके। कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इफ्स एंड बट है, तो अभी हम क्या करते हैं, इन इफ्स और बट को थोड़ा साइड में रहने देते हैं, इनको आगे के लिए रख देते हैं। ठीक है, और क्या है, और अभी वैसे भी लेट भी हो जाएगा सब लोग को, तो अपना अपना आप लोग को भी कार्य करना होगा। तो अभी आप क्या कीजिए, ये जितना भी सारी चीजें हमने डिस्कस की ना, इन सबको आप लोग रिजॉल्व करना शुरू कीजिए, कि आप डाटा लेके आइए कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, सब चीजों के बारे में आप देखिए। और कौन कौन से फेवरेबल लोग हैं कॉलेज में, ऐसे कौन से टीचर्स, हमें यूजुअली कुछ ऐसे ही लगते हैं, फैकल्टीज लगते हैं कॉलेज में, है ना, उसे फैकल्टी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। मतलब फैकल्टी कोऑर्डिनेटर वो होता है जो क्लब को कोऑर्डिनेट करता है, एक टीचर होता है। तो अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई टीचर है जो कृष्णा कॉन्शियस है, या मंदिर आता हो, या मंदिर, या कर किसी को ऐसा कुछ पता, जैसे मेरे पास एक व्यक्ति है जो कृष्णा, मतलब क्या बोल सकते हैं, मंदिर आते थे, पर वो पिलेस कॉलेज से ही थे, तो मैं उनको जो है क्या बोल सकते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा उनसे कांटेक्ट करने का। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति पता है जो मतलब आपके कॉलेज में टीचर हो, या कोई कुछ भी पोस्ट पे हो कॉलेज के अंदर, चाहे भले वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी में भी हो, और वो जो है क्या बोलते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रोसेस में हो,
परंतु वो कनेक्टेड हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है तो बहुत ईजी होगा। जैसे हम गरवारे कॉलेज में थे, तो गरवारे कॉलेज में ऐसे हुआ था कि वहाँ के जो एक टीचर थे वो मंदिर आते रहते थे, तो उनसे हमारी वहीं पे बात हो गई थी। तो ही स्टार्टेड प्रोग्राम फॉर अस, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करके दी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी, सही में अगर आपके कॉलेज में भी कोई ऐसा टीचर हो या व्यक्ति हो जो ऑलरेडी मंदिर से कनेक्टेड हो या थोड़ा बहुत फेवरेबल हो हिंदुइज्म को लेके, सनातन धर्म को लेके, तो ऐसे लोगों को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो हम वैसे उनके थ्रू भी जा ओके। सकते हैं, ठीक है। ओके। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे मैंने जो भी एक एमएस का हेड है, मैंने आज ही उससे बात किया। तो हम लोग को क्लब खोलने में चैलेंजिंग पॉइंट क्या आ सकता है, तो उन्होंने बताया। तो उसमें बताया कि जैसे अगर हम कोई भी क्लब खोल रहे हैं उस कॉलेज में, तो 10 to 15 वॉलंटियर्स चाहिए। और जैसे हाँ हाँ, वीडियो सही है। एडिटिंग, जैसे वीडियो एडिटर वगैरह हो गया, वो सब चाहिए। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर आने चाहिए। और 10 से 15 वॉलंटियर जो रहेंगे उनके लिए क्रेडिट जो है वो अप्रूव होना चाहिए कॉलेज के थ्रू। तो हाँ, ये बहुत ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें। चीज है। हाँ प्रो जी। तो ये सारी चीजें हैं, और वो लोग मतलब बाहर के लोगों को जैसे हम्म। इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, जो नहीं कॉलेज नहीं, के स्टूडेंट स्टूडेंट है। क्लब में, हाँ क्लब में जो रजिस्टर्ड हाँ बंदे रहेंगे वो तो क्लब के स्टूडेंट, मतलब जो क्लब के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, रजिस्टर्ड ही हो, मतलब कॉलेज के होने चाहिए। तो आपको क्या करना हाँ। पड़ेगा ऐसे में, आपको जो है आपके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनका बोलना पड़ेगा भाई मैं क्लब ऑन कर रहा हूँ, क्लब ओपन कर रहा हूँ, उस क्लब में जो है तू भी क्या बोल सकते हैं, ये रहना, ठीक है। और तू भी उसका एक यस। मेंबर रहेगा, पार्ट रहेगा। क्लब ज्वाइन करने का हमको उनको फायदा भी देना आता है, जैसे उनको अटेंडेंस देते हैं हम लोग और हाँ ये यस सब। यस, अटेंडेंस रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, और वो जो क्रेडिट्स है वो थोड़ा वॉइस प्रिंसिपल से हमें कोऑर्डिनेट करके वो चीजें कराना पड़ेगा। सुनो मैं आपको और बताता हूँ वो सब चीजों के, सुनो जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं और क्लब क्लब में कैसे लेके आते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। उसका आप टेंशन मत लो, क्लब के लिए बथेरे बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बच्चे मरते हैं ऐसे क्लब ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे उनको सर्टिफिकेट्स मिले, क्रेडिट्स मिले, या उनसे कुछ ना हाँ कुछ तो यस मिले, यस प्रभु ठीक है। तो जी। आप यस। उसका टेंशन मत लो, बच्चे तो आपके पास अपने आप आएंगे सामने से। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कौन से सिलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लो, ओके। बच्चे सब हो जाएंगे हमारे पास। जो मतलब बेसिक जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, जो कॉलेज में दिखाने के लिए, क्लब शुरू करने से पहले एचओडी को जो हम दिखाते हैं कि हम लोग इतने इतने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं क्लब फॉर्म करना, वो पूरा एक कम्युनिटी के लिए जितने बच्चे लगते हैं, कैसे उन बच्चों को कन्विंस करना है, क्या उनसे बात करनी है, कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं क्लब के अंदर, वो सब चीजें हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। और क्लब की क्या ओके। क्या एक्टिविटीज होंगी, हम बच्चों को क्या प्रेजेंट करना है कि हम क्लब में क्या एक्टिविटीज कराते हैं, क्योंकि वो बच्चों का तो मोटो स्पिरिचुअल नहीं है, उनका तो मोटो ये है कि हम एक वेलफेयर क्लब है जो क्या बोलते हैं बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। हमको उनको इतना ही बताना है। हम उन्हें बोलेंगे कि हम अलग अलग स्पीकर्स बुलाएंगे और मोटिवेशन देंगे, या हम कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहे हैं, हम बच्चों को उतना ही बताएंगे, ठीक है। यस जो यस। बाहर के बच्चे रहेंगे, मतलब जो ज्यादा क्लब में इन्वॉल्व ना हो, बस खाली क्लब के एक मेंबर बन के रहे, छोटा मोटा काम कर दे क्लब का बस खाली, ठीक है। जो ओके। कोर टीम रहेगी वो हमारी रहेगी, उनको पता रहेगा स्पिरिचुअल चीजें सब। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी दो हम्म ऑप्शंस और हैं उस कॉलेज में। हम्म, जैसे एक एक डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे उसमें हाँ जो एनजाइटी, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स और हम्म। ये सब के ऊपर मतलब वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने मतलब बताया कि आप मंथली जो है 2 सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। बट वो जो 2 सेमिनार अरेंज करेंगे उसमें जो पहला स्पीकर आएगा वो ठीक है, बट दूसरा जो स्पीकर रहेगा वो चेंज रहना चाहिए। हाँ तो सब करेंगे हम, स्पीकर्स की कमी नहीं है हमारे पास, आप टेंशन मत लो, है ना। स्पीकर भी कर सकते हो आप, एक काम करो ना, हमें कभी देखो सुनो, अभी अगर आपके पास ऐसा सोशल जो डिपार्टमेंट है तो हम उनसे कोलैब कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा हाँ क्लब ही यस उसी के लिए बना हुआ है ना। यस हम यस आप यस उन्हीं प्रभु से जी। बात कीजिए ना कि हम ऐसा ऐसा क्लब फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें बोलिए कि मैं आपको बताऊंगा, देखो क्या स्टोरी लाइन रहेगी ना वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्लब फॉर्मेशन का क्या स्टोरी लाइन रहेगा, ठीक है। हम कैसे करते हैं वो सब, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले थोड़ा सा जो है चीजें लेके आइए मेरे पास, फिर हम क्लब का जो है नेक्स्ट सेशन में से पूरा क्लब पे डिस्कशन करेंगे, बस खाली आप थोड़ा सा डाटा लेके आइए, फिर हम सब ओके। डिस्कशन क्लब के बारे में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके प्रभु जी। अभी थोड़ी मल्टीपल मीटिंग्स लगेंगे, हृदय माधव वो आपको इन्फॉर्म करेंगे इस बारे में। तो अभी मल्टीपल मीटिंग्स लगेंगे हम लोग को, ठीक है। तो बीच में वीक में हम लोग इवनिंग में मिलते रहेंगे, तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहना, आई नो आप लोग का टाइम जो है इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी आपके पास आपके अकेडमिक्स होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, बट क्या बोल सकते हैं, वी नीड टू रियली वर्क ऑन दिस। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारे एक एक दिन में 3 3 मीटिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इतना जो है क्या बोल सकते हैं मीटिंग्स होते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा, आपके तो वीक में एक दो लेंगे, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इवन तो आपका रोल नहीं रहेगा, आप सोचोगे प्रभु जी मेरा तो कोई रोल नहीं है, मैं तो प्रीवियस कॉलेज का नहीं हूँ, फिर भी आप सुनिए, आप सीखोगे, इजंट इट, आगे आपको सब काम आने वाले हैं सब, बिकॉज आगे जब आप कोर टीम में इन्वॉल्व होगे तो आपको सब काम आएगा, ठीक है। तो दिस फॉर ओके। ऑल द डिवोटीज, अंकुश प्रभु, दीप प्रभु एंड ऑल,
अमन प्रभु है ना, जो डिवोटीज जो है क्या बोलते हैं, भले कुछ कुछ डिवोटीज नहीं होंगे यहाँ पे विलेज से, आशु बट प्रभु इट इज नहीं है फॉर आशु है ना, जो भी मतलब डिवोटीज है जो क्या बोलते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना आपको विलेज कॉलेज से, बट वो लोग आगे प्रीचिंग में रहेंगे, तो उन सभी के लिए ठीक है। तो मुझे लास्ट क्या है, मतलब आज का टास्क आपने क्या दिया है? आज का जो जो मैंने बताया करण प्रभु को, करण प्रभु आप व्हाट्सएप पे मुझे एक बार पोस्ट कर देना, उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैं आपको चेंजेस बता दूंगा, नहीं रहेंगे चेंजेस तो हम ग्रुप पे उसको पोस्ट कर देंगे, हाँ और फिर यस उसी दिस को इज नेक्स्ट बस उसी को हम नेक्स्ट जो है क्या बोलते हैं सेशन में हम बात करेंगे उसी सब पॉइंट्स के ऊपर यस जो यस मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। ओके प्रभु जी। हम इसी ऐसे फॉर्मेट में चलेंगे कि भाई कुछ मिस ना हो, और ऐसा नहीं कि भाई मीटिंग हो रहा है बट उसका आउटपुट और कुछ हाथ पैर नहीं है, सिर पर, तो प्रॉपर ट्रैक रहेगा तो ये अच्छा रहेगा, राइट? ठीक है ब्रो, तो आई फील आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बिकॉज मीटिंग्स थोड़े क्या बोलते हैं छोटे रहे, और है ना जितना ये कंडेंस रहे उतना अच्छा रहता है बाकी सब लोग के लिए भी, है ना, तो ज्यादा हम बाकी फिर जो पॉइंट्स आ जाएंगे डिस्कस, हमारे पास जब पॉइंट्स रहेंगे तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ब्रो। यस थैंक यू। ओके प्रभु जी। ठीक है, तो आई फील ब्रो जी हमें यहीं पे एंड करना चाहिए आज के लिए। ये यस हृदय माधव आप कुछ ऐड करोगे? जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू यू। अरे प्रभु जी ग्रेटिट्यूड कुछ की जरूरत ही नहीं है, अभी तो हम ये मीटिंग्स करते ही रहेंगे, तो ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं प्रभु जी, है ना, सभी लोग है ना क्या बोल सकते हैं, सबका साथ सबका विकास है, बस वही बात है ना, सभी लोग हमारे भक्त लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका निरंतर प्रयास और बहुत सारे साहस के साथ जो है हम इसको करेंगे, मुकेश तो को भी है बस ना। एक कांटेक्ट है जो है, एक टीचर है जो इस्कॉन के साथ काफी फेवरेबल है, तो ऐसे कुछ दो चार टीचर्स भी मिल जाते हाँ वही मैं बोल तो। रहा हूँ, आप क्या कीजिए बच्चों का जो भी जिसके पास जो जो कॉन्टेक्ट है ना सब आप लिस्ट डाउन करके गए, हम सब जो है वो सब बहुत काम आएंगे हमको। यस चलेगा, फुल फोर्स लगा देते हाँ हैं। इस डन ब्रो, थैंक यू। ठीक है ब्रो, चले प्रभुपाद चलेगा, की जय। जय जय इधर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की। ठीक है, जय आप में है ना करण को आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको चेक करके फिर जो है उसको ग्रुप पे डाल दूंगा, यस ओके प्रभु है ना, जी और ओके किसी का कोई क्वेश्चन वोश्चन रहेगा तो पोस्ट कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, है ना, फिर आगे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में हृदय माधव को आपको मैसेज करेंगे, ठीक ओके प्रभु जी। ओके। है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।